जय हिंद। आज आम मॉडर्न ओडिशा हिस्ट्री लास्ट पार्ट पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक नंबर कौन देछि ना हु वेयर सम ऑफ द की लीडर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओडिशा सेपरेट प्रोविंस। को माने मुख्य भूमिका थिले ओडिशा को स्वतंत्र राज्य गठन करिबारे। तो यार आंसर ऑप्शन डी देछि मधुसूदन दास, फकीरमोहन सेनापति एंड गंगाधर मेहर। और भी अनेक थिले जेपरि कि गोपबंधु दास, नीलकंठ दास और महाराजा कृष्णचंद्र गजपति है। छह जन मुख्य ना मन रखिए मधुसूदन दास, फकीरमोहन सेनापति, गंगाधर मेहर, गोपबंधु दास, नीलकंठ दास और कृष्णचंद्र गजपति है। बहुत सारे थे लीडर। तो छह जन ना मुख्य मन रखिए। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए हु वाज द ब्रिटिश रूल इम्पोज ऑन ओडिया स्पीकिंग पीपल ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ कॉन्क्वेस्ट। जिते ब्रिटिश इनिशियल स्टेज मैंने कौन निज शासन अधीन को आनी कौन सब रूल इम्पोज करते। तो यार आंसर हम ऑप्शन सी जोटा देखिए देखो दे वर प्लेस्ड अंडर द 3 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लेक्टेड इनसिग्निफिकेंट एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स है। नेग्लेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लेक्टेड था इनसिग्निफिकेंट एंड माइनॉरिटी ग्रुप से 3 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते। नंबर क्वेश्चन देखिए व्हिच कमिटी डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट 1933 नोन एज द ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी। तो यार कमिटी ना हो जॉन ऑस्टिन हॉबैक कमिटी है। जॉन ऑस्टिन हॉबैक कमिटी। जदि आप प्रीवियस पार्ट वाला देखी ना ओडिशा ऑब्जेक्टिव जीके तो आप प्लेलिस्ट विजिट करी आप देखिपारे सब तक पार्ट वाइज आम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो देन 4 नंबर क्वेश्चन दीजिए व्हिच प्रोविंस डिड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोस्टल ओडिशा लाइक बालेश्वर, कटक एंड पुरी बिलोंग टू ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जो था बालेश्वर, कटक, पुरी एटा को डिवीजन था এটা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ଥିଲା ହେଲା। ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲ, ମାଡ୍ରାସ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କୋଉଟା କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବର ହେଇଛି who was the driving force behind the formation of Odisha as a separate state। किए माने सेपरेट स्टेट करिवारे कहार बहुत भूमिका था। ड्राइविंग फोर्स किए करते गोपबंधु दास है। गोपबंधु दास 6 नंबर देखिए बिफोर बिकमिंग ए सेपरेट प्रोविंस व्हिच लार्ज प्रोविंस वाज द ओडिशा ए पार्ट ऑफ। ओडिशा सेपरेट पूर्व को पार्ट था यहाँ कहली बेंगल प्रेसिडेंसी था कौन बेंगल प्रेसिडेंसी था जोटा कि आमर कौन ओडिशा तो किसी जिला था बेंगल प्रेसिडेंसी किसी माड्रास प्रेसिडेंसी जमी गंजाम कोरापुट है। सेंट्रल प्रोविंस था कोटा संबलपुर। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए हु आर द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ ओडिशा इन 1946। न्यूली स्टेट जो है तार फर्स्ट चीफ मिनिस्टर किए थे ना हरिकृष्ण महतो। किए थे हरिकृष्ण महतो मन रखिए है। हरिकृष्ण महतो कहते कौन उत्कल केशरी कौन कहते टाइटल दिए उत्कल केशरी। नेक्स्ट व्हेन डिड द ओडिया मूवमेंट गेन सिग्निफिकेंट मोमेंटम। ओडिया मूवमेंट केबे सिग्निफिकेंट मोमेंट ना 19th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी है। तो मोमेंटम था 19th सेंचुरी है। नेक्स्ट व्हाट वाज वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओडिया मूवमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट कौन था ओडिया मूवमेंट रो आंसर हम प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड कल्चर। ओडिया लैंग्वेज कल्चर को प्रिजर्व कर रखिबा एवं डेवलपमेंट करियो है। 10 नंबर दीजिए हु वाज प्रपोज द मर्जर संबलपुर विथ द ओडिशा डिवीजन इन 1855। के प्रपोज करते संबलपुर ओडिशा डिवीजन में मर्ज करने 1855 ना हेनरी रिकेट्स के हेनरी रिकेट्स बुझला। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन दीजिए इन 1868 हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया सजेस्टेड द ग्रुपिंग ऑफ ओडिशा स्पीकिंग एरिया इनटू ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने जो कि सेक्रेटरी था जी की कौन प्रपोज करता ओडिया स्पीकिंग ओडिया जो सब एरिया लोक कहते गोटे सिंगल मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर रखिले गोटे डेवलपमेंट करहब इजिली है। तो ना हूँ स्टाफोर्ड नॉर्थ कोटे है। स्टाफोर्ड नॉर्थ कोटे कौन ना स्टाफोर्ड नॉर्थ कोटे है। 1868 मन रखिए 1868 से प्रपोज करते यहाँ सजेस्ट करते। 12 नंबर देख चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सर स्टाफोर्ड नॉर्थ कोटे व्यू ऑन द ओडिया स्पीकिंग एरिया। तो यहाँ हम
करेक्ट स्टेटमेंट कोड देछि ही बिलीव दैट द ओडिया स्पीकिंग एरिया शुड बी ग्रुप्ड इनटू ए सिंगली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से कोन बिलीव करथे जे ओडिया स्पीकिंग एरिया जे सब थिला गोटे सिंगली एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर रहइबो ठीक अछि कारण सेटा सजेस्ट करथिला 1868 रे तो एई तो करेक्ट हैला 12 नंबर देछि ए हैला करेक्ट नेक्स्ट 13 नंबर देछि which event marked a significant turning point for the Odia movement in 19th century कोटा टर्निंग पॉइंट थिला ओडिया मूवमेंट चलथिला किंतु मधे कोन थिला ना हमरो ग्रेट फैमिन जो हेतला 1866 रे हला नौ को दुर्भिक्ष पड़थला मरुडी पई हला द ट्रेजिकल फैमिन 1866 मन के तापर एटा को बंद हेतला परे एटा देखा देथिला ओडिया मूवमेंट नेक्स्ट हाउ मेनी provinces were virtually attached to Odia speaking territory due to the division by the British केतटा डिवीजन चारटा डिवीजन थला ब्रिटिश में चारटा डिवीजन करथे कोन कोन बेंगल प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी सेंट्रल प्रेसिडेंसी और बिहार प्रेसिडेंसी हैला 15 नंबर दीजिए why did the British divided Odia speaking territory into four different provinces से चारटा डिफरेंट कोन पे डिवाइड करथले ओडिया स्पीकिंग पीपल मानको टू मेक टू इजियर एडमिनिस्ट्रेटर द रीजन ने इजी केपरि शासन कर परि इजी रे सेटा सेति में डिवाइड करथले चारटा डिवीजन रे नेक्स्ट 16 नंबर दीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ ओडिया मूवमेंट कोन हला आउटकम कोन असला ओडिया मूवमेंट द ग्रोथ ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इन ओडिशा ग्रोथ हेतला द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट प्रोविंस ऑफ ओडिशा इन 1936 छत्तीस से सेपरेट प्रोविंस हला स्वतंत्र प्रदेश हला ठीक अछि द प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओडिया लैंग्वेज कल्चर प्रिजर्वेशन रहला तो ऑल ऑफ द अबव आंसर 16 नंबर देन 17 नंबर देजी consider the following statement about Odia movement देजी which of the statement are the correct हला क्वेश्चन दा करेक्ट इज तो इट वाज स्टार्टेड इन 19th century स्टार्ट हेतला ठीक अछि 19th century माने केबे स्टार्ट हे सेंचुरी कहले 19th century कहले 1801 हला 1 जनवरी 1800 रु कोन 1900 मसिया पर्यंत 20th century ले 1900 रु कोन 2000 मसिया पर्यंत हला तो इट वाज लीड बाय प्रोमिनेंट ओडिया लीडर्स such as मधुसूदन दास फकीर सेनापति गंगाधर मेहर जो लीडर थे इट लेड टू द ग्रोथ ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इन ओडिशा हला एटा सोशल पॉलिटिकल एसोसिएशन रो ग्रोथ भी देखाइतला तो तीनटा को हबो करेक्ट हला आई डबल आई ट्रिपल ए स्टेटमेंट करेक्ट देन 18 नंबर देछि मैथ ऑफ द फॉलोइंग देछि उत्कल दीपिका न्यूज़पेपर एपटे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कोठी पब्लिकेशन हेतला को प्लेस रे उत्कल दीपिका जोटा कि मोर कोन गौशंकर राय करथिले सुडी कटक रे हला उत्कल दीपिका गौशंकर राय कटक रे इंदी गंजाम न्यूज़ ताउची पारालाखेमुंडी रे गंजाम न्यूज़ पारालाखेमुंडी मन किबे आउ सेमते कोन एटा ओडिया हितबोधिनी कोन तला ना इच्छापुर ओडिया हितबोधिनी दजी C2 सॉरी ओडिया हितबोधिनी बरहमपुर उत्कल भाषी इच्छापुर जो इच्छापुरटा वर्तमान प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश अछि ना इच्छापुरटा वर्तमान प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश उत्कल भाषी जो न्यूज़पेपरटा थला सेटा इच्छापुर पब्लिश हेतला मन किबे आ ओडिया हितबोधिनी बरहमपुर जोटा कि गंजाम अछि ओडिया हितबोधिनी बरहमपुर आउटे मन किबे गुण दर्पण जोटा कि दिगपहंडी रे पब्लिश हेतला बुझेला आ उत्कल दीपिका केबे हेतला गौशंकर राय फाउंडर हले उत्कल दीपिका को 4 अगस्त 1866 स्टार्ट हेतला जो ग्रेट फैमिन हेतला 1866 से 4 अगस्त डेट मन रखिबे कारण 4 अगस्त को हम सेलिब्रेट करू ओडिया जर्नलिज्म डे 4 अगस्त पालन करे एथि पई ना उत्कल दीपिका फर्स्ट ओडिया न्यूज़ पेपर थला सेति पई 4 अगस्त हम पालन करू ओडिया जर्नलिज्म डे मन रखिबे ता फाउंडर हले गौशंकर राय आ को फाउंडर हले बाबू विचित्रानंद दास देन रोल ऑफ उत्कल सम्मेलन इन ओडिया मूवमेंट when was the first Odia national conference known as the Utkal Sammilani held in Govt Odia national conference हेतला कोडी ना कटक रे 1903 मसिया डिसेंबर 30 और 31 हला डिसेंबर 30 और 31 हेतला उत्कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कटक रो कोडी थला ना जुबरार मधुसूदन दास को रेसिडेंस रे हेतला हला नेक्स्ट कोड नंबर हु आर द प्रोमिनेंट लीडर एसोसिएटेड विथ द लीडरशिप ऑफ उत्कल सम्मेलन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेटिव ईयर प्रोमिनेंट लीडर के थे उत्कल सम्मेलन ना मधुसूदन दास है मधुसूदन दास थे प्रोमिनेंट लीडर
से जो कॉन्फ्रेंस होता है हेते जोग देते विक्रम देव है जानकीनाथ बोस जी नेता सुभाष चंद्र बोस को बापा थे जानकीनाथ बोस फकीरमोहन सेनापति है आ राजा कृष्णचंद्र देव सब जोग देते। नेक्स्ट व्हाट वाज द प्राइमरी गोल ऑफ उत्कल सम्मिलनी प्राइमरी गोल कौन था ना मर्ज ऑफ ओडिया स्पीकिंग एरिया जो सब ओडिया लोक कहते जो एरिया से सब मर्ज कर गोटे प्रदेश गठन करने। देन 22 नंबर देती क्वेश्चन इन 1914 AD द annual session of Utkal Sammilani was held at Parakhamudi under the presidency of जो उत्कल सम्मिलनी पाराखेमुंडी होता तार प्रेसिडेंट किए करते ना विक्रमदेव वर्मा किए करते विक्रमदेव वर्मा है किंग ऑफ जयपुर थे विक्रमदेव वर्मा मन रखिए। नेक्स्ट 24 नंबर इन व्हिच ईयर डिड उत्कल सम्मिलनी डिसाइड टू जॉइन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जॉइन करते डिसाइड कले 1920 है 1920 जॉइन करने डिसाइड करते। देन 24 देती consider the following statement about the Utkal Sammilani. The Utkal Sammilani was primarily focused on the promotion of the Bengal language and culture in Odisha. ना এটা ভুল বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রমোট করা নথিলা এটা ভুল দেইছি স্টেটমেন্ট রাই হলা। তো মধু স্টেটমেন্ট 2 দেইছি মধুসূদন দাস প্রোভাইডেড লিডরशिप অফ উৎকল সম্মিলনী লিডরशिप করଥିଲେ ঠিক আছে which continue to hold annual meeting in different places in Odisha মানে ওড়িশার বিভিন্ন স্থাନରେ annual meeting করা হতলা কনফারেন্স করা হতলা তো এটা ঠিক আছে statement 2 is the right answer only 2। next 25 देइছি मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट देइছি ये देइছি प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल सम्मिलनी आ कोई ईयर से प्रेसिडेंट थिले बुझला। तो विश्वनाथ कर से थिले विश्वनाथ कर 1914 मन के विश्वनाथ कर 1914 आ राधानाथ राय होची B1 देइছি राधानाथ राय 1912 आ मधुसूदन दास 1911 मधुसूदन दास 1911 प्रेसिडेंट थिले। तापरे गोपबंधु दास এটা হচ্ছে 4 1917 গোপন দাস 1917 বুঝলা। देन मर्जर संबलपुर विथ ओडिशा डिवीजन व्हाई वाज संबलपुर इंक्लूडेड इन द सेंट्रल प्रोविंस 1862 रे कोन करथिले संबलपुर को सेंट्रल प्रोविंस रे ऐड करथिले कोन पे ना फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस है एडमिनिस्ट्रेटिव माने ताको शासन करबे इजी होबे सेटा सेंट्रल प्रोविंस रे ऐड करथिले। देन 27 नंबर when was the notification issued to replace the Odia with Hindi as the language of office court and school in Sambalpur माने संबलपुर रे फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज कर देले ऑफिशियल लैंग्वेज ताको चेंज करे पई नोटिस इशू करथिले ओडिया ऑफिशियल लैंग्वेज होबे केबे ना 1895 केबे करथिले 1895 1 जनवरी हला। ता पूर्व 1895 से हिंदी को करथिले ऑफिशियल लैंग्वेज जो परे नोटिफिकेशन विड्रॉ करे एटा चेंज होला। देन 28 What was the name of the journal that protested against the replacement of Odia with the Hindi in Sambalpur? को जर्नल रे एटा प्रोटेस्ट करा होतला ना संबलपुर हितासिनी रे हैला संबलपुर हितासिनी एटा प्रोटेस्ट करतले जे ओडिया को कोन हिंदी को रिप्लेस करी ओडिया करिया पे ऑफिशियल लैंग्वेज बुझला। नेक्स्ट 29 नंबर who was the viceroy of India when the Odisha of Sambalpur presented a memorial to him in 1900 asking for the inclusion of Sambalpur tract with the Odisha division of Bengal कि ना लॉर्ड कर्जन हैला लॉर्ड कर्जन भाइसरय हेतले थिले संबलपुर हेतले 1900 मसिया संबलपुर को कोन ओडिशा डिवीजन ऐड कर पाए। देन 30 नंबर which of the following individual played a significant role in recommending the inclusion of Sambalpur with the Odisha and restoration of Odia as the official language किए सहयोग करथिले से लॉर्ड कर्जन को ना एंड्रू सेजर हैला इंडिविजुअल प्लेयर थला रिकमेंडेशन रे लॉर्ड कर्जन कोन करथिले संबलपुर को ओडिशा डिवीजन रे ऐड करथिले बुझला। एंड्रू सेजर थिले सिग्निफिकेंट रोल तांगर थला हैला तापर ओडिया को कोन ऑफिशियल लैंग्वेज करे भी रिकमेंडेशन करथिले संबलपुर के एंड्रू सेजर। नेक्स्ट 31 Why did the Chief Commissioner of Nagpur issue a notification in 1895 replacing Odia by Hindi as languages of office, court and school? सेमती कोन पई नागपुर रो चीफ कमिश्नर इशू करथले जे हिंदी को रिप्लेस करी ओडिया लैंग्वेज करे पई ऑफिशियल लैंग्वेज करे हां टू मेक इजियर टू ब्रिटिश टू कम से कोन करथले ओडिया बाय हिंदी रिप्लेसिंग ओडिया माने ओडिया को रिप्लेस करी हिंदी करिया करथले के नागपुर कमिश्नर हला 1895 रे करथले के ओडिया को रिप्लेस करी हिंदी करे पे ना ताको इजी एडमिनिस्ट्रेशन करे पे
टू वीकेन द ओडिया लैंग्वेज कल्चर ओडिया लैंग्वेज को माने वीक करिया पई करथले प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करिया पई करथले हला ऑल ऑफ द आंसर बुझिला 32 देछि हु आर द चीफ कमिशनर ऑफ नागपुर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैंग्वेज कंट्रोवर्सी इन संबलपुर जेतले किए थिले चीफ कमिशनर ऑफ नागपुर ना से एंड्रू फ्रेजर किथिले एंड्रू फ्रेजर से फास्ट कोन करथिले ना ओडिया को रिप्लेस कर हिंदी करथिले ता परे परे से चेंज करितला बुझिला देन 33 What is the name of the circular issue in 1905 restoring Odisha as the official language in Sambalpur and the adjacent tributary states and transferring to them Odisha division? এটা না থলা কোন 33 ଦେଇଛି D রিজলে সার্কুলার কোন করে রিজলে সার্কুলার হলা then 34 ଦେଇଛି in which year were the inclusion of Sambalpur with the Odisha division and the restoration of Odia the official language officially reflected କେବେ ହେଲା ନା 1905 ରେ ହେଲା officially କେବେ ହେଲା ओडिया लैंग्वेज ऑफिशियल है 1905 रे देन 35 व्हिच फैक्टर लीड कर्जन टू सपोर्ट द मर्जर ऑफ संबलपुर विथ ओडिशा डिवीजन ही वाज प्लानिंग फॉर टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंस लाइक टू पार्टीशन ऑफ बेंगल माने बेंगल परिका गोटे कोन पार्ट करे पे डिवीजन करे पे गोटे ऑर्गेनाइजेशन करे पे जेमत लागी ही वाज अफर्ड या रिबेलियन बाय द ओडिया पीपल से ओडिया पीपल डरुस लागी से देछि कोन देछि व्हिच ऑफ द एबोंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कोटा इनकरेक्ट माने कोटा भूल देछि ताले डेटा स्टेटमेंट ठीक अछि हला से चाहुतला बेंगल दिन पार्टीशन करी सेही परी करिया पे आउ से ओडिया पीपल माने विद्रोह को डरुतला रिबेलियन को डरुतला तो कोटा भी ठीक नहीं बुझिला नन ऑफ द अबव आंसर देन 36 देछि ईयर देछि एपटे हला Henry Ricketts, then the Commissioner of Odisha, proposed the merger of Sambalpur with the Odisha division. केबे Henry Ricketts प्रपोज करथिले संबलपुर को ओडिशा डिवीजन ऐड करे पे हला एटा अब 1855 हेनरी रिकेट्स मनला सेमती लॉर्ड कर्जन ऑर्डर द ट्रांसफर संबलपुर एंड द अर्जुन फेडरल स्टेट टू ओडिशा डिवीजन केबे एटा होची 1905 हला 1905 मनला सेमती द चीफ कमिशनर ऑफ नागपुर notification replace ओडिया हिंदी लैंग्वेज ऑफिस कोर्ट एंड स्कूल इन संबलपुर एटा केबे तला ना एटा होची सी 4 1895 केबे 1895 एटा हम पढिले बेटी पूर्व हला एंड संबलपुर एंड adjoining feudatory states were included in the central provision for the administrative convenience एटा केबे तला ना 1862 हला 1862 सेंट्रल प्रोविंस से ऐड हेतला 1862 रे ए संबलपुर देन बढ़िया में फॉर्मेशन ऑफ बिहार ओडिशा प्रोविंस 37 क्वेश्चन देती इन व्हिच ईयर वाज द बिहार ओडिशा प्रोविंस क्रिएटेड सेपरेटिंग द ओडिशा डिवीजन फ्रॉम बेंगल माने बिहार ओडिशा प्रोविजन अलग हे गेला केबे बेंगल प्रेसिडेंट सु बिहार ओडिशा अलग गेला 1912 हला 1912 अलग हला बेंगल प्रेसिडेंट सु के बिहार ओडिशा तापर 1936 में बिहार अलग हे गेला देन 38 व्हिच ईयर रिमेन अंडर द मद्रास प्रेसिडेंसी after the creation of the Bihar Odisha province Bihar Odisha गठन होला परे मध्य गंजाम आउ कोन भिजयंगरम ता मद्रास प्रेसिडेंसी अंडर चला हला मन के नेक्स्ट 39 What was the resolution moved by Satyendra Sinha in the Imperial Legislative Council known as कोन कजे ना सिन्हा रेजोल्यूशन कोन कजे सिन्हा रेजोल्यूशन कजे हला then which viceroy was suggested the separation of the Hindi and Odia area from the Bengal leading to the creation of the Bihar Odisha province ये सजेस्ट करथले जे हिंदी और ओडिया जे बेंगल रो हिंदी और ओडिया रीजन को अलग करे पे लॉर्ड हार्डिंग कोन लॉर्ड हार्डिंग देन 44 व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द सिन्हा रेजोल्यूशन कोन पूर्ण संगतला टू सेपरेट हिंदी एंड ओडिया एरिया फ्रॉम द बेंगल रो बेंगल भाषा कहतले बंगाली तो सेटिकर हिंदी और ओडिया को अलग सेपरेट करे पे प्रपोज करथले रेजोल्यूशन देथले टू क्रिएट ए सेपरेट प्रोविंस ऑफ ओडिशा गोटे अलग करे पे प्रपोज करथले टू अमलगेट ऑल ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट इनटू ए सिंगली एडमिनिस्ट्रेटिव सब ओडिया पीपल को गोटे यूनिट करे पे तो तीनटा का ऑल ऑफ द अबव आंसर बुझला सिन्हा रेजोल्यूशन सब थिला मन रख देन वर्ड्स में देखिए व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ द फिलिप डॉफ कमिटी इन 1924 1924 जो फिलिप डॉफ कमिटी थला दी जन थे फिलिप और डॉफ तो कमिटी कौन थला मेन पर्पस कौन थला
टू एग्जामिन द इश्यू ऑफ द मर्जर ऑफ ओडिया स्पीकिंग एरिया माने एग्जामिन करबा पे आस्ते हला ए फिलिप और डॉग कमिटी बसी थला एथि पे कमिटी गठन होतला टू एग्जामिन इश्यू द मर्जर ऑफ ओडिया स्पीकिंग एरिया बुझिला इन 43 What are the primary purpose of the Philip Dow Committee recommendation in 1927? 1927 रे कोन recommendation करथिले better administration हला better administration. Then 44 which commission accepted the recommendation of the Philip Dow Committee regarding the merger of Odisha? जे recommendation कले ताको को commission accept कला ना Simon commission accept करथिले हला Simon commission accepted the Philip Dow Committee कोन recommendation बुझिला. Then 45 is what are the suggested after the acceptance of the recommendation by the Simon Commission? कौन suggest कले accept कला बले कौन suggest कले the setting of a boundary commission so a boundary commission गठन करे पे suggest करथिले बुझिला. Then 46 in which year did Maharaja Krishnachandra Gajapati Parakam represent the issue of the merger of Odisha speaking area at the second round table conference in London? केबे 1930 से याको इश्यू टाको ओडिया स्पीकिंग एरिया को लंडन रे एटा लिखितले कहितले 1930 के कृष्णचंद्र गजपति हला जॉइन करतले सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन. देन 47 देजी व्हाट हैपेंड द फिलिप डॉ कमिटी रिकमेंडेशन कोन हला तापरे इट वाज सबमिटेड द साइमन कमिशन द सबमिटेड हेतला इट वाज प्रेजेंटेड एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन द सेकंड राउंड टेबल समय एटा प्रेजेंट हेतला और इट वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कोन ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी करतले तो ऑल ऑफ द अबव आंसर बुझला. Then 48 what step was taken in 1930 in favor of a separate Odisha province? Answer of presentation of a memorandum presentation of a memorandum hela. Then choose the correct statement about the Philip Dow Committee hela कोटा correct. It was appointed by the British government of India British government appointment करतला ठीक अछि. It was headed by CL Phillips and AC Dow जो कहतले दी जण ना अछि CL Phillips और AC Dow दी जण थिले गनादि कमिटी आइछि. तो इट सबमिटेड द इट रिपोर्ट इन डिसेंबर 1924 डिसेंबर 1924 रे सबमिट कर देथिला रिपोर्ट हैला. तो ऑल ऑफ द आंसर दे 49 डी. देन 50 when was the Odisha boundary committee formed to examine the administrative financial and other consequences of setting up a separate administration for the Odia speaking people केबे बाउंड्री कमिटी गठन करा जायतला हैला एग्जाम करिया पे हमर 1931 से केबे गठन करा जायतला 1931 से बाउंड्री कमिशन गठन करा जायता. देन who was the chairman of the Odisha boundary committee 1931 1931 को गठन कराला बाउंड्री कमिटी तार चेयरमैन के थिले सर सैमुअल ओ डैनियल हला ओ डोनेल सैमुअल ओ डोनेल था चेयरमैन मन के एटा इंपोर्टेंट अछि आस करे. देन who among the following was the chairman of Odisha boundary commission कहली Odisha boundary commission रो चेयरमैन थिले सैमुअल ओ डोनेल जोटा OSSC 2024 आसीस. Then according to the recommendation of the Odisha boundary committee what are the proposed area of the new province of Odisha इतर केसला 33000 स्क्वायर माइल थला 33000 स्क्वायर माइल एटा कते किलोमीटर होबा अपन कन्वर्ट करि कि कोंतु 33000 स्क्वायर माइल कते किलोमीटर होछि कमेंट रे कोंतु. देन who are the associated members presenting the Odias Bihar and Telugu in the boundary commission कि एसोसिएट थला हमरो केसीजी माने कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव हला कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव और एसएन सिन्हा और एन राजू हला एथले एसोसिएट मेंबर जोटे कि ओडिया बिहार और तेलुगु मानक कोन बाउंड्री कमिशन रो एसोसिएट मेंबर थले बुझिला. ओडिया पे थले कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव और बिहार मानक थे एसएन सिन्हा तेलुगु में कोन एन राजू. देन क्रिएशन ऑफ सेपरेट प्रोविंस when did the Odisha become a separate province केबे हितला हम जानि 1936 एप्रिल के माने कि 1936. how many districts were initially included in the newly formed province of Odisha जेतले न्यू स्टेट हितला प्रोविंस हितला 36 रे हेतले 6 टा थिला कोन थिला 6 टा थिला कोन कोन जानछन्ती कटक पुरी गंजाम बरमपुर न सरी कटक पुरी गंजाम बालेश्वर संबलपुर कोरापुट हला माने कि कटक पुरी गंजाम बालेश्वर संबलपुर कोरापुट. Then who was the first governor of Odisha province first governor थिले जॉन ऑस्टिन हव्याक हला जॉन ऑस्टिन हव्याक परीक्षा आसी छि क्वेश्चन मन रखिबे. then which act led the creation of the new state Odisha को act on से थिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 then who was the chief minister of Odisha when the state merged with province state merged होला सेतले chief minister first थिले हरकृष्ण महादेव हला हरकृष्ण महादेव गवर्नर हले
जॉन ऑस्टिन हॉब्रैक। देन व्हिच प्रिंसली स्टेट ऑफ ओडिशा मर्ज विथ इंडिया इन 1948 जो मर्ज होता प्रिंस स्टेट ओडिया इंडिया साइन है एडमिनिस्ट्रेशन केबे हमर व्हिच प्रिंस स्टेट ऑफ ओडिशा मर्ज विथ इंडिया इन 1948 1948 रे केबे मर्ज मयूरभंज 1948 रे के मर्ज होता मयूरभंज मन रखिए है मयूरभंज। Then 61 when was the conference of the Prajamandal held where the people expressed their desire to merge with Odisha। कॉन्फ्रेंस होता प्रजामंडल द्वारा जोटा कि पीपुल एक्सप्रेस करते ओडिशा 1947 एवं 1947। देन व्हाट आर द कटक कॉन्फ्रेंस कौन था द मीटिंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ओडिशा टू डिस्कस द मर्ज विथ गजट रीजन मर्जर पे मीटिंग कराइला। गजट रीजन जोटा कि पहाड़ हिली एरिया जोटा कि मतलब झारखंड छत्तीसगढ़ बड़ स्टेट बड़ डिस्ट्रिक्ट सब है। देन 63 which act enabled the transfer of the administration of the Govt state to the government of Odisha becoming operational from 1st January 1948। that was going 63 C extra provincial jurisdiction act enabled है कराइला बुझला। Then 64 when was the motion moved in the Odisha legislative assembly shift to the capital of Odisha from Cuttack to Bhubaneswar मूव करने पे लेजिस्लेटिव assembly होतला केबे 1947 हैला। मोशन टा हमर कोन तो मोशन मूव इन द ओडिशा लेजिस्लेटिव रिजोल्यूशन पास करथला 1947 रे। 64 देजी when was the motion moved in Odisha legislative assembly to shift the capital of Odisha from Cuttack to Bhubaneswar। कटक रु कैपिटल थला फर्स्ट तापर भुवनेश्वर चेंज करे पे मोशन मन प्रस्ताव केबे पारित हैला मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ओडिशा विधानसभा रे केबे हेतला ना सितंबर मास 1946 मतलब के 30 सितंबर 1946 30 सितंबर 1946 रे ओडिशा विधानसभा रे कोन पास हैला मोशन प्रस्ताव पास हैला जे हमर कैपिटल कटक रु भुवनेश्वर को शिफ्ट करिया बुझला। तापर जो हमर आर्किटेक्चर थिले कि हमर भुवनेश्वर बरगढ़ ओटो क्वेंसी बर्गर से भुवनेश्वर प्लान डिजाइन करते है। 1949 अगस्त 1949 ऑफिशियली कौन कैपिटल चेंज होता शिफ्ट होता बुझेगा। देन 65 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम द ओडिशा एंड वेयर मर्ज विथ बिहार माने ओडिशा रो को एरिया था जोटा कि मर्ज होता बिहार रे सेटा होची सढैकळा है सढैकळा छौ हम जोटा है सढैकळा जोटा बिहार मर्ज होता एबे प्रेजेंट डे कोन एटा झारखंड अंडर अछि झारखंड अंडर अछि सढैकळा मन के झारखंड अंडर अछि सढैकळा प्रेजेंट डे सेते कोन बिहार झारखंड मिसिक थला तो बिहार एटा ओडिसा रो पीपल भी अधिकांश भी अछंती सढैकळा हैला जोटा कि झारखंड जाउछि। देन 66 द स्टेट ऑफ मयूरभंज वाज इंटीग्रेटेड विथ ओडिशा इन द ईयर स्टेट ऑफ मयूरभंज केबे ऑफिशियली हमरो ओडिशा इंटीग्रेटेड हला 1949 हला 1949 ऑफिशियल तो रे इंटीग्रेटेड हेतला मयूरभंज ओडिशा। देन 67 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओडिशा आर्यंत ओडिशा ऑब्जेक्टिव जीके तो एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ले टोटल 11 पार्ट रे हम टोटल एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ले मिडिवल हिस्ट्री ओडिशा पढ़ले मॉडर्न हिस्ट्री ओडिशा पढ़ले फ्रीडम स्ट्रगल इन ओडिशा पढ़ले फॉर्मेशन ओडिशा प्रेजेंस इति हमर सरी गला बुझला। जदि चैनल नु आछन चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु ए क्लास करे पई आ संगन को शेयर करंतु आपन कमेंट करहि मते मोटिवेशन मिले वीडियो करे पई आ कमेंट आपन फीडबैक निश्चय दियंतु तापर हम कोटा पढिबा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद।